Hello बच्चों, let's read this question. Cleansing action of soap occurs because these are the options given. Non-polar tails of soap molecule dissolve in grease. Oil and grease dissolved into lyophilic centers of soap micelles, which are then washed away with water. Hydrophilic heads dissolves in grease. Grease dissolve in soap solution. So let us consider about the key concept of this question. एंड इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. की कॉन्सेप्ट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. अगर हम केमिकली सोप का देखें देन इट हैज़ द बेसिक फॉर्मूला RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव विच शोज कि जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है दैट इज द नॉन पोलर पार्ट. दिस इज नॉन पोलर पार्ट एंड this is the polar part of the soap. पोलर पार्ट एंड जो नॉन पोलर पार्ट है अल्काइल रीजन जो है दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. दिस इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड soluble in ऑयल एंड डर्ट. ऑयल और डर्ट में सॉल्युबल है बट जो हमारे पास पोलर पार्ट है दैट इज soluble in water. Soluble in water and insoluble in oil and water. सो जो हमारे पास नॉन पोलर रीजन है दैट एग्रीगेट्स दी ऑयल एंड डर्ट बिकॉज सॉल्युबल है ऑयल एंड डर्ट इसमें नॉन पोलर पार्ट में. सो वी कैन राइट नॉन पोलर पार्ट ऑफ सोप एग्रीगेट ऑयल और डर्ट एंड फॉर्म माइसिल. माइसिल का फॉर्मेशन हो जाता है एंड दिस माइसिल इज वॉश्ड ऑफ विद वाटर. जो हमारे पास स्ट्रक्चर आता है ऑफ द सोप दैट लुक समवट लाइक दिस. ये जो टेल है दिस लॉन्ग चेन शोज नॉन पोलर रीजन एंड जो हमारे पास ये हेड है दिस शोज पोलर रीजन ऑफ द सोप. एंड जो हमारे पास इस तरीके से बीच में डर्ट प्रेजेंट होगा वो एग्रीगेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ नॉन पोलर पार्ट ऑफ द सोप. Hence we can write this is polar and it is also termed as hydrophilic. It is hydrophilic head and this is hydrophobic tail. Hydrophobic tail. Hydrophilic means water loving and hydrophobic means repellent. Hydro means water, so water repellent. Hydrophobic means water repellent. So this was the procedure कि किस तरीके से जो डर्ट प्रेजेंट होता है वो सोप की हेल्प से रिमूव होता है और वी कैन से दिस वाज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. नाउ लेट अस सी ऑप्शंस क्या कहते हैं. ऑप्शन ए सेज नॉन पोलर टेल ऑफ सोप मॉलिक्यूल डिसॉल्व इन ग्रीस. सो इट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ऑप्शन बी सेज ऑयल एंड ग्रीस डिसॉल्व्ड इनटू हाइड्रोफिलिक सेंटर ऑफ सोप माइसिल विच आर देन वॉश्ड अवे विद वाटर. ऑयल एंड ग्रीस जो है हाइड्रोफोबिक सेंटर के साथ जो हाइड्रोफोबिक
टेल है उसके साथ डिसॉल्व होते हैं, नॉट विद द हाइड्रोफिलिक सेंटर्स. So this is incorrect. C says hydrophilic head dissolves in grease. Hydrophilic head तो water में dissolve होते हैं. Grease dissolve in soap solution. And this is also incorrect. So by this we can say जो हमारे पास option A है, that will be the final answer of this question. Option A, which says non-polar tails of soap molecules dissolve in grease. So option A is the final answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck.